Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we will discuss economy market analysis, as this is your course of investment portfolio management. So the main emphasis of the investor is to have a very lucrative or make an investment which will give him maximum benefit or maximum return. So there are many factors in the economy which can affect the profitability of companies, or they can have a positive or negative impact on the profitability of different companies. So we will be discussing the economy analysis, how the investor will perform economy analysis or market analysis before making an investment. So our main emphasis is to understand relationship between the stock market and the economy. Secondly, analyze conceptually the determinants of stock market and make basic forecast of possible changes in the level of market. यहाँ पर देखें, हम लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़े हैं, तो उसमें आपका जो एम्फोसिस है इन्वेस्टर का, वो यही है कि वो चाह रहा है कि वो ऐसी इन्वेस्टमेंट करे, ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करे जहाँ पे उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले. अब यहाँ पर आप जो है वो मार्केट को और इकोनॉमी को एनालाइज करें हैं कि अगर किसी भी कंट्री में आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस कंट्री की जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, उसकी मार्केट की सिचुएशन क्या है, और फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स होंगे इकोनॉमी के, मार्केट के, जो उसकी जो भी मेजर स्टॉक मार्केट है और जो है मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी मार्केट्स हैं, उन पे इम्पैक्ट कर सकता है, जो ओवरऑल फिर वो कंपनीज पे इम्पैक्ट करेंगे. सो आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने सबसे पहले इकोनॉमी या मार्केट सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसकी एनालिसिस करनी है, तभी फिर आप उस इकोनॉमी में से कंपनीज को सिलेक्ट करोगे. Now, making an investment is a top-down approach, and what is top-down approach is that when an investor intends to make an investment, first of all, they'll select an economy or stock market in which they are interested. So they analyze that stock market or economy. Secondly, after that, they'll select an industry from that stock market which is performing well, and after that they'll select an individual companies in a particular industry which is performing good or which has a profitable opportunity. So the investor need to understand the economic factors that affect stock prices initially, because for analyzing economy you should know that what are the major macroeconomic variables which is impacting the profitability or the working or the performance of stock market, and what positive and negative signals are. Then after that, once you have all this information, you use valuation models applied to overall market and consider how to forecast market changes. Like today's working has drastically impact on the future performance. So the investor can apply different evaluation models to find out the indication of the market, and use forecasting techniques to see that how the overall market will go in the future, what are the major trends which predicting certain profitability or certain other kind of indicators which can be more profitable or which can be threatening for an investor. So as the stock market's likely direction is of extreme importance to investor, because if the stock market is performing well, the individual company, because the overall performance of stock market is dependent on the working of individual companies. So if stock market is working good and it is showing a bullish trend, or it's showing a positive trend, so obviously it's beneficial for an investor to invest in that company or in that the sector or in that stock market. अब देखें, जब हम बात करते हैं ना इन्वेस्टमेंट की, तो ये मतलब टॉप डाउन अप्रोच है. मतलब आप सबसे पहले ये देखते हैं कि आप सेलेक्ट करते हैं कोई भी इकोनॉमी, कोई भी स्टॉक मार्केट, और उसको आप मुख्तलिफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और मुख्तलिफ तरह से देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं.
फिर उसके बाद आप अब मुख्तलिफ वैल्यूएशन मॉडल्स आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो और आप देखते हो कि इस मार्केट का ट्रेंड कहाँ जा रहा है, ये स्टॉक मार्केट फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी, क्योंकि आपको फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा वो है इंटरेस्ट है। सो आप उसको देखोगे कि फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी होगी या नहीं होगी, कि मार्केट किस तरीके से जाएगी, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करती है तो वो परफॉर्मेंस बेहतर करती है, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सो अगर तो स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छी डायरेक्शन में जाएगी, सो वो बेनिफिशियल है आपके इन्वेस्टर के लिए। सो फिर वो विलिंग होगा कि उस इकोनॉमी या उस मार्केट में इन्वेस्ट करे। Now, economy and the stock market, this relationship is very important, because in economy has a direct impact on the stock market, and the major indicator of the performance of the economy is gross domestic product, which is defined as the market value of final goods and services produced by an economy for a particular time period. And it also consists of some of consumption spending, investment spending, and government spending, and net exposed. And GDP numbers are prepared quarterly or yearly, and are these actually this all these numbers constitute a basic measure for the economic health and strength of the economy. So for any economy, if GDP is doing well, or as GDP is growing, so it has a positive impact on the working of the stock market, because as the revenues of the individual companies have increased due to more production, so obviously the GDP will be will show a positive impact. So the GDP or is a true indicator of the economic health of the economy. Secondly, another thing is economic business cycle. The business cycle are the ups and downs in the aggregate business activity, and this has a very potential impact on the on individual companies, because when the aggregate economy is expanding, like everyone is very much optimistic about the future profit, and there is lots and lots of investment being done in the in the economy. So obviously everybody is benefiting from a positive trend, but as the economy goes from peak to trough, or from it is going to a recessionary period, so every company is declining, the sales is declining, they are curtailing their production. So so obviously the profit will consistently declines. But it's very important that we should understand that what is the length and turning point in the business cycle, because if there is a business cycle, but if the country is performing very well in controlling these business cycle, so it will not harm the individual investor. So you have to certain all these things. Like अगर हम बात करते हैं ना दो चीज़ों की, यहाँ पर एक इकोनॉमी की बात हो रही है और इकोनॉमी ही में बिजनेस साइकिल की बात हो रही है। पहले जो है वो ये कह रहे हैं कि आपका जो इकोनॉमी है उनका उसका और स्टॉक मार्केट का बहुत मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास जो ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो आपको हम देखते हैं कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसकी एग्रीगेट वैल्यू को कहते हैं। या आप जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं अपने फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन को, उसकी एग्रीगेट वैल्यू को देखते हैं। या आपकी आप इसमें देख सकते हैं कि कंजम्पशन स्पेंडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, और आपके नेट एक्सपोर्ट्स क्या है। इनको सबको मिला के आप जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है और ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट पे, और फिर वो उसका कंपनीज के ऊपर आएगा।
सेकंड चीज़ की जो यहाँ बात हो रही है वो आपकी हो रही है बिजनेस साइकिल की। बिजनेस साइकिल जो होते हैं वो एक्चुअली आपके अप्स एंड डाउन्स होते हैं बिजनेस एक्टिविटी में, मतलब टोटल बिजनेस एक्टिविटी में, एग्रीगेट बिजनेस एक्टिविटी में। अगर आपके ओवरऑल इंडिकेटर्स जो है ना पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, आपका जो इन्वेस्टर है वो बहुत इस चीज़ पर पूरी उम्मीद है कि आगे वो प्रॉफिट उसको मिलेगा और बिजनेस आगे जो है मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, तो सो ऑन ऑब्वियसली वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जब आपको इन्वेस्टर जो है वो पेसिमिस्टिक हो जाता है, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता और वो कर्टेल करता है अपनी इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट सबके लिए कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक और चीज़, तो वो फिर ऑब्वियसली यूजुअल कंपनीज पे ही इम्पैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने ये देखना है कि कोई भी आपका जो पीरियड है, चाहे वो रिसेशनरी पीरियड है, चाहे वो आपका पीक का पीरियड है, चाहे वो आपका ग्रोथ का पीरियड है, वो कितने अरसे के लिए लास्ट करता है। अगर तो रिसेशनरी पीरियड जो है वो बहुत कम पीरियड के लिए लास्ट करता है, मतलब रहता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छी पॉलिसीज बना रही है कि वो अपनी जो कंपनीज या बिजनेस को जल्दी रिसेशनरी पीरियड से निकाल देती है, तो उसमें फिर ऑब्वियसली उसमें आपका इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट जो है ना प्रॉपर्ली रेगुलेटेड है और उसको जो है ना आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर रिसेशनरी पीरियड भी होगा तो वो थोड़े पीरियड के लिए लास्ट करेगा। सो ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Now, for predicting or foreseeing that how the economy is performing or what are the key indicators of business cycle, the information has to be extracted from different sources. In Pakistan, you have Federal Bureau of Statistics and Economic Survey. From that, you can get information about many important economic indicators, and they also try to date business cycles, that what are the previous peaks and depression and recessionary period and growth period of different economy. So they dates this business cycle. And obviously another important indicator would be the composite index of general economic activity, like series of leading, coincidence and lagging indicators of economic activity to assess the status of the business cycle. So these key composite indexes can also help us to assess the economic activity of any country. अब देखें, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखना चाह रहे हैं या बिजनेस साइकिल्स को देखना चाह रहे हैं, तो हमारे पास कुछ की इंडिकेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो इसमें आपके पास अगर पाकिस्तान में देखें तो हमारा ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक है, इकोनॉमिक सर्वे है, इवन आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू भी मुख्तलिफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उनकी मुख्तलिफ सीरीज और मुख्तलिफ जो है वो जो लीडिंग ट्रेंड्स हैं वो आप देख सकते हो। देन डेट्स बिजनेस साइकिल व्हेन पॉसिबल, ये और इसके अलावा ये लोग एक और काम भी करते हैं कि वो बिजनेस साइकिल की जो डेट्स होती है, क्योंकि एक बिजनेस साइकिल जो है वो एक साइकिल के तौर पे चलता है, मतलब ग्रोथ फेज से आप बूम के फेज पर आते हो, बूम से रिसेशन और फिर डिप्रेशन की तरफ जाते हो। तो ये वो डेट भी ट्राई करते हैं कि आपको पता चले कि आप किस फेज में से गुजर रहे हो और आगे जो है ना वो क्या ट्रेंड जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारी कॉम्पोजिट इंडेक्स हैं जिसमें आप जो है वो मुख्तलिफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को असेस कर सकते हो और देख सकते हो कि आपकी जो कंट्री है वो या इकोनॉमी जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो किस बिजनेस साइकिल से गुजर रही है। Now, as we are looking the relationship between stock market and business cycle, stock prices lead the economy. Like when the stock prices are rising and they are increasing, so obviously it will show a positive trend and the economy will grow. So historically, it is the most sensitive indicator because the stock prices are being determined by the sentiments of the people. As if people are pessimistic about their future possibilities or the working of the company, so obviously they will start selling those stocks and gradually the stock prices decline. But if the people are optimistic about future profits, so they will try to buy stocks of companies, so it will increase
the prices of the stock markets, like just like the demand and supply rule. The stock prices constantly turn before the economy. That when there is increase in the stock prices, so obviously they will shape the future of the economy. And before any economic turn, we can see major changes in the stock prices. So how reliable is the this relationship? Because the ability the or to the, of the market to predict recovery is much better than its ability to predict recession. Like when we are seeing different trends, so we have to understand that with the help of trend analysis, or with the help of making valuation models, so we can easily predict the recoveries, but we cannot easily predict the recession. For that we have to make many other things into consideration. Like जब हम बात करते हैं ना रिलेशनशिप की स्टॉक मार्केट की और बिजनेस साइकिल की, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो स्टॉक प्राइसेस होती हैं, जो मार्केट में स्टॉक प्राइसेस होती हैं, वो मार्केट को, इकोनॉमी को लीड करती हैं। वो पहले चेंज होती हैं, उसके बाद वो इकोनॉमी को एक जो है वो टर्न पॉइंट देती हैं। लेकिन जब हम इनकी रिलेशनशिप देखते हैं, तो इसकी रिलेशनशिप में हमें रिकवरीज के इस बारे में ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, हम उस पर ट्रेंड एनालिसिस लगाते हैं, वैल्यूएशन मॉडल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम उस मॉडल से, उन तमाम चीज़ों से रिकवरीज को बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू हम जो है वो रिसेशन प्रिडिक्ट करें। Now, another aspect is that macroeconomic forecast of the economy. Like there are many macroeconomic variables available, and the data of all these things are available, and many other organizations are also involved in measuring these macroeconomic variables. So first of all, you have to identify that how the available, what is the authenticity and what is the goodness of available forecasts. And if you see that prominent forecaster have similar prediction and differences in accuracy are very small, like you have to compare your forecast with these prominent forecasting, and when these forecasting has a very little differences, so the investor can use this forecast in order to predict future pattern of pattern about the market behavior of that economy. Secondly, does monetary activity forecast economic activity? Like there are many activities related to monetary system of the country, like there is shifts in demand and supply of the currency. Like there are many sources which are responsible for increase and decrease of supply of money, or increase and decrease of the demand of money. So if first of all you have to see this. Secondly, you can also see the regulatory bodies, like the central bank is responsible for regulating the money supply within the economy and developing a monetary policy for the country. So you have to see that what type of monetary policies are being devised by State Bank of Pakistan or Central Bank of that country. That will help you to forecast that what the country, or what the central bank is thinking about the economy. And because obviously they are devising policy to control certain deviation or giving certain shape to the economy, so based upon that you can have your forecast and see the situation of the economy in which you want to invest. Like देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो अवेलेबल होते हैं, और उनकी फोरकास्ट भी अवेलेबल होती है। मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं वो फोरकास्टिंग करती हैं, मुख्तलिफ रिसर्चर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो आप इन तमाम फोरकास्टिंग को देखेंगे और फिर उसको अपनी फोरकास्टिंग के साथ कंपेयर करेंगे। अगर तो एक्यूरेसी में इतना डिफरेंस नहीं है, तो फिर आप उसको यूज़ कर लेंगे अपनी फोरकास्टिंग के लिए और पैटर्न्स देखने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को मेजर करने के लिए, और उसमें क्योंकि आपकी इंटेंशन तो उधर इन्वेस्ट करने की है, तो उसको आप देखेंगे। सेकेंडली, फिर एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंट्री में जो पैसे की ज़्यादती या सप्लाई या डिमांड है, उसमें अगर चेंजेस आ रही हैं, तो वो भी आपको एक अच्छा एस्टिमेट दे सकती हैं उस इकोनॉमी की वर्किंग के बारे में। तो उसको आप देखेंगे।
सेकेंडली फिर आप देखते हैं कि उस जिस कंट्री में या जिस इकोनॉमी में आपने आगे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करे हैं, वहाँ पे आपका जो उनका सेंट्रल बैंक है वो किस किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी डिवाइस कर रहा है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी की किसी डेविएशन को कंट्रोल करने के लिए या कोई शेप देने के लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह बना रहे होते हैं। तो उनको किसी अपनी इकोनॉमी के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं, कुछ खदशात होते हैं, तो वो फिर आपके सामने आ जाएंगे उस पॉलिसी को देखते हुए। सो उसके बेसिस के ऊपर फिर आप जो है ना वो अपनी फोरकास्टिंग करके उस इकोनॉमी की हेल्थ को मेजर कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये एक बहुत अच्छा जो है ना वो एस्टिमेट्स आपके लिए हो जाएंगे। सेकेंडली फिर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट को, क्योंकि आपकी स्टॉक मार्केट जो है उसके लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के मेजर्स वगैरह मिलते हैं, लाइक मार्केट मेजर बाय इंडेक्स और एवरेजेस। यू लाइक इन इफ यू लुक इनटू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, you can see that we have 100 index companies, top 10 index companies. Then many times many indexes are designed for particular segment like blue chip companies, etc. Or most popular indexes are Dow Jones Industrial Averages, Standard Poor 500 Composite Stock Index. These indexes can also help you to understand the situation of that stock market, and you can easily predict that where you is it favorable for you to invest in that stock market or not. And these indexes are also favored by many institutional investors and also money managers, because they want to invest in certain companies which will be which are performing well. So if you have these top companies available in their indexes, so it will be beneficial for these investors to invest in these type of companies. So देखें आपके पास मुख्तलिफ इंडेक्सेस होते हैं जिससे आप एवरेज वगैरह मेजर करते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट की, और फिर इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर इंडेक्सेस होती हैं जिससे ब्लू चिप कंपनीज, जो टॉप ब्लू चिप कंपनीज हैं, जो अच्छा परफॉर्मिंग कर रही होती हैं। इसके अलावा आप जो है वो मुख्तलिफ डिज़ाइन इंडेक्सेस हैं, जैसे डोजर्स एवरेज इंडेक्स है, और या स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 कॉम्पोजिट स्टॉक इंडेक्स है, जो आपको टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लार्जर अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या मनी मैनेजर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतर होता है, क्योंकि वो उनको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना बेहतर है और नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप जो है ना वो इन्वेस्टमेंट बेहतर तरीके से कर सकते हो। Now there are various determinants of stock prices, there are various things which can impact on the stock prices. So this can be called as exogenous or predetermined variables. These are the variables of the economy which can potentially affect the stock prices. First of all, potential output of the economy. And what is the potential out of the economy, how much goods and services are being produced by the country, or by all the businesses within the country, the productivity, the resources, and secondly the investment opportunities. We are talking about potential output, so obviously while seeking the potential output, we'll see the investment opportunities. Secondly, we'll see the corporate tax rate. What is the corporate tax rate within the economy imposed by the government? And then government spending. What is the government spending on productivity, on different now how the government spending and nominal money supply affect stock prices, because these government spending and money supply will definitely affect the total aggregate spending of the government. Government being spending on different projects, different transportation projects, or many other projects, they are spending on that, which together with a tax rate affect corporate earning. Obviously tax rate also affect the corporate earning, because they have to pay the taxes from their income, so they can definitely affect the corporate spending. Then total aggregate spending together with economy's potential output
and past changes in prices determine current changes in the price level. Obviously you can use these as aggregate spending and the potential of the output of the economy, and when there are different changes in the in the output or any other thing which can determine the changes in the price, and obviously these changes can determine the current changes in the price level. So obviously you will be doing a trend analysis कि आप क्या कर रहे हो, कि आप देख रहे हो कि प्रीवियस पीरियड्स में क्या आपकी टोटल स्पेंडिंग क्या थी, और इकोनॉमी का जो टोटल आउटपुट का पोटेंशियल था वो कितना था, और उसकी वजह से क्या उस प्राइस पे क्या चेंजेस आई थी। तो आप उन्हीं बेसिस को लेके फिर आज की करंट की प्राइसेस की चेंजेस को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अभी जो है ना वो क्या चेंजेस होंगे, और वो किस तरीके से आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट कर सकती है। Then corporate earning and expected inflation affect expected real earning. Like expected inflation is something which can depreciate the value of money, or which can decrease the purchasing power. So obviously it can affect anything like the cost of the product, and many other things. So this will affect the expected real earning of the company or the corporate real earning. And then interest rate and required rate of return also affect by expected inflation. Obviously interest rate has to be used for the compensation of the depreciation of the money, and required rates also have to be increased in order to compensate itself for inflation. Then stock prices affected by earning rates. If economy is prospering, earning and stock prices will be expected to rise. Then all these things will affect the stock prices. And if you look into the economy, and the economy is very growing, and there are lots of prospects in the economy, and the GDP is growing, and many other things are collectively growing. So obviously it would be expected that the stock prices will increase in the future in that economy, and that would be a profitable opportunity for you to invest in that country or in that economy. अब यहाँ पे देखें ना कि अगर आपको कॉर्पोरेट अर्निंग जो होती है और जो आपकी इन्फ्लेशन होती है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी जो एक्चुअल आपने अर्निंग करनी है, वो रियल अर्निंग करनी है, उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। और ये इंटरेस्ट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोनों जो है ना वो इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑब्वियसली जब आपको नॉमिनल रेट के ऊपर आपको कर्जे वगैरह मिलेंगे, तो आपने उसके ऊपर जो है ना वो उसके बीच में इन्फ्लेशन के लिए कंपनसेशन ऑब्वियसली होती है। इसी तरह जब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो उसके बीच में भी आप कोशिश करते हो कि जो डिप्रिसिएशन हो रही है मनी की, वो उसके बीच में आपको कंपनसेट किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करता है। और आप जब इसको प्राइसेस स्टॉक प्राइसेस को देखते हैं, तो स्टॉक प्राइसेस ऑब्वियसली इफेक्ट होती हैं कॉर्पोरेट अर्निंग से और ये इंटरेस्ट रेट्स वगैरह से। सो अगर आपको किसी इकोनॉमी में नज़र आ रहा है कि वो प्रॉस्परस कर रही है, वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, उसका जीडीपी बहुत हाई है, उनकी अर्निंग बहुत हाई है, तो वो उसका डेफिनेटली है कि उस प्राइसेस जो है ना उसकी उस प्राइसेस जो है उनमें जो स्टॉक मार्केट की है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेंगी। तो वो फिर आपके लिए एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है कि उस दिन आप जो है वो इन्वेस्ट कर दें। Now, when we are valuing the market, we have to apply fundamental analysis for the market, and in which we use estimates of certain things. First of all, streams of shareholders' benefits. And what is shareholders' benefit? These are earnings or dividends. That how these earnings would increase in the future, and how the company will increase their dividends, and for with how much amount or with how much percentage these dividends would be increased. Secondly, we have to see the required return on these stocks, and earning multiplier, that how much the company is going to earn in the future. Then steps in estimating earning stream is that we have to see estimate the GDP of the country. Secondly, we have to see the corporate sale, then corporate earning before taxes, and finally corporate earning after taxes. देखें, जब हम किसी भी कंट्री की मार्केट को वैल्यू कर रहे हैं और स्पेसिफिकली स्टॉक एक्सचेंज को देख रहे हैं, तो हमने उसके जो है वो मुख्तलिफ एस्टिमेट्स को देखना है, मुख्तलिफ चीज़ों को देखना है, जिससे हमें पता चलेगा कि वहाँ से हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये
देखेंगे कि आपको शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट मिल रहा है, मतलब स्ट्रीम्स ऑफ शेयर होल्डर बेनिफिट्स का मतलब ये है ना कि आप ये देखोगे कि आपको बीइंग ए शेयर होल्डर आपको अर्निंग क्या मिलेगी, या जो डिविडेंड्स क्या मिलेंगे, अर्निंग का जो आपको पोर्शन है वो क्या मिलेगा, इसके अलावा रिटर्न जो है वो क्या मिलेगा, और आपकी जो अर्निंग मल्टीप्लायर क्या है, मतलब जो आप अर्निंग कर रहे हो वो कितनी स्पीड से जो है ना वो बढ़ रहा है। देन जब हम ये एस्टिमेट कर रहे होते हैं स्ट्रीम में, तो आप ये देखते हैं कि आपकी जो कंट्री है उसका जीडीपी कितने बढ़ रहा है, तो उसकी ट्रेंड एनालिसिस करके आप अगले पीरियड्स के जीडीपी को देखते हैं। फिर आप देखते हैं कि ऑन एवरेज जो है ना वो मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं वो कॉर्पोरेट सेल्स कितनी कर रही हैं, और वो उसी में जो है ना वो उसकी अर्निंग बिफोर टैक्सेस क्या है और अर्निंग आफ्टर टैक्सेस क्या है, मतलब वो ऑब्वियसली उसके बीच में फिर कॉर्पोरेट टैक्सेशन वगैरह की भी चीज आ जाएगी। सो इन तमाम चीजों को देख के फिर आप देखोगे कि आपको उस मार्केट में इन्वेस्ट करने से क्या चीजें जो है ना वो मिलेंगी और कितना बेनिफिट मिलेगा। सो ये तमाम चीजें जो है आप जब मार्केट को वैल्यू करी हो तो आप लोग देखते हो। Then when we are valuing market, the earning multiplier or price earning ratio can be used. We have discussed price earning ratio in your previous class in corporate finance. So according to analysis, we can say that earning multiplier is more volatile than earning component, and it is obviously when it is more volatile, so it can be difficult to predict. You cannot simply extrapolate from past price earning ratios, because there are many changes which can occur, like in from 1990 to 1928 to 1995, average for a Standard Poor 500 is 14. So price earning ratio tend to be higher when interest and inflations are low. So because there are many other variables which can affect price earning ratio, so you cannot simply make a trend analysis of price earning ratio. लाइक जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो हम अर्निंग मल्टीप्लायर को भी यहाँ पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अर्निंग मल्टीप्लायर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज बहुत रैपिडली अप डाउन होता है, तो इस और कुछ वेरिएबल पे वो ज़्यादा रिएक्ट करता है, कुछ वेरिएबल पे वो कम रिएक्ट करता है। तो इस वॉलेटिलिटी की वजह से आप उसको बहुत जो है वो 100% क्लियरली जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपके इसके अलावा हम ये कहते हैं कि और इसकी ना ही हम जो है ना वो एक्सपोरेट कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस की बेसिस करके सकते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो की, क्योंकि अब में बहुत सारी चेंजेस जो है ना वो होती हैं। अगर आप देख लें कि 1928 से 1995 तक जो स्टैंडर्ड एंड पुअर है की जो 500 इंडेक्स है, उनका जो प्राइस अर्निंग रेशियो था वो 14 रहा था। सो प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो ज़्यादा हाई होता है जब आपकी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट लो होते हैं, मतलब आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स को देख के आप प्राइस अर्निंग रेशियो को जो है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो और आप उसकी जो है ना वो एस्टिमेट कर सकते हो। Another approach might be when you are forecasting the market, that you can use the business cycle approach. We can see a prominent relationship between stock market price and economy. So with the help of business cycle, we can predict the economy or market, and we can see that at what business cycle the market is, and what are the positive and negative impact might be when you invest in that security. So the first thing would be that we can see that on which business cycle or cycle turning point the market is, and what would be the next step in that business cycle. Like business cycle goes in a pattern, so we can predict the next pattern with that, because stock total return could be negative or positive, or when business cycle has peaks or bottoms. So you can see all these things, and based upon that you can make your prediction. Like आप जब business cycle या जो हम trade cycle की बात करते हैं, जिसमें आप growth, boom phase है, recessionary phase है, depression phase है, हम इसको देखते हैं। So ये आप market की जो future है उसको आप predict कर सकते हैं ये देख के कि आपका जो economy है वो कौन से business cycle में prevail कर रही है, क्या अभी positive आ रहे हैं आपके returns, या
मार्केट में जो है वो आपकी पीक पर है कि बॉटम पे है, कि क्या सिचुएशन है। सो उससे आप फ्यूचर के पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो ये भी एक अप्रोच हो सकती है कि आप जब फोरकास्टिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप इकोनॉमी को बिजनेस साइकिल अप्रोच के थ्रू भी प्रिडिक्ट कर सकते हो अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। But when we are forecasting market, or when we are forecasting the economy, it's not a very easy job. It is subject to certain error. But when investor is forecasting different economies, so they can count on the unexpected occurring. That what are the things which are not expected, and what are trends are being followed in the market, and what are the prominent happening in the economy. So this all these things will help an intelligent useful forecast for the market, which can help in certain time, and also likely to give the direction of the economy. Like जब हम बात करते हैं ना forecasting की, तो obviously कोई भी जो है फ्यूचर के बारे में 100% तो प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, और एक्यूरेट प्रिडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ हम एस्टिमेट ही लगा सकते हैं। लेकिन आप जो एक बीइंग एन इन्वेस्टर, आप ये देख सकते हैं कि क्या चीज़ जो है वो अनएक्सपेक्टेड हो रही है, कौन सी नई चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये तमाम चीज़ें आपको एक अच्छी फोरकास्ट देने में मदद करेंगी, और मुख्तलिफ टाइम पे ये बहुत आपको हेल्पफुल भी करती हैं। और अगर अगर मतलब अगर बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करी, लेकिन आपको एक डायरेक्शन दे देती है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, तो उसकी बेसिस पे फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर सकते हो।